Good morning, everyone. So, today we are starting with statistics. That is our first part in economics. Under statistics, we are starting with unit 1, that is introduction, or what we call as a collection of data. Now, let us start with first what is called economics. We all have heard about this term economics in class 10th, class 9th, class 8th, but exactly what is economics? डेफिनेशन हम सबको आती है, बिहेवियर का स्टडी है, बट इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स मीन्स स्टडी ऑफ एलोकेटिंग स्केर्स रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेट यूजेस टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. बेसिक लैंग्वेज में बात करें तो इकोनॉमिक्स मीन्स कि इफ़ आई हैव अ चॉइस टू मेक, विच चॉइस आई मेक एंड व्हाट आई सेलेक्ट is economics. Okay, for example, let's say you have around 10,000 rupees in your pocket and a wedding is coming up. Now you want to buy a dress, you want to buy shoes, you want to buy accessories, you want to buy all these things. So your wants are basically unlimited, but the resource, that is the money, that is limited, scarce. You have to choose, either you'll be selecting a dress or shoes, or you have to compromise somewhere or the other. That is called economics. For example, you go to the market and you're very hungry, you want to eat, you only have 500 rupees in your pocket. You can go for a pizza, or you can go for a burger and french fries, or you can go for a plate of chole bhature and cold drink. So 3 options है ना हमारे पास, पिज्ज़ा, बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज, छोले भटूरे एंड कोल्ड ड्रिंक. तो कौन से ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे? गिवन भूख लगी है हमें, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं, रिसोर्सेज हमारी स्केयर्स हैं, 500 रुपीज़ ही हैं खाली, क्या सेलेक्ट करेंगे? इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स. सो बेसिकली इफ़ यू सी नाउ, यू ऑल आर यूजिंग इकोनॉमिक्स इन एवरी डे लाइफ, इन योर डेली लाइफ यू यूजिंग इट. बी इट हमारा टाइम बहुत स्केयर्स है, हमने आज उसको 1 घंटा हमारे पास था, हमने पढ़ने में लगा दिया, हमने मूवी वॉच करने में लगा दिया, हमने खेलने में लगा दिया, कहीं भी लगा दिया. तो हमने डिवाइड कर दिया ना टाइम को अपने. 1 घंटा था, रिसोर्स था, टाइम स्केयर्स था, 1 hour ओनली. वी वॉन्टेड टू वॉच अ मूवी, वी वॉन्टेड टू स्टडी, वी वॉन्टेड टू प्ले, बट वी मेड अ डिसीजन. That alternative, that allocation which we did is called economics. Now coming to economy. So now we all know that we live in India. Now we all know we live in India. Now India as a country. Do we say we live in India as an economy? No, we don't live in India as an economy. We live in India as a country. So what is an economy? Now, a country is basically a geographical boundary in which we live. We can touch it, it's physical, it's tangible. But economy, on the contrary, is not a geographical boundary. Economy is an intangible thing. You cannot touch this. It is a state that provides you livelihood. Now, what is the state which provides us livelihood? This state, that means a country which is giving you enough resources, it is giving you enough resources, it is giving you enough opportunities so that you can earn well. Maybe earning well by means of production, maybe earning well by means of labor, maybe earning well by means of a job. लेकिन एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे दिया एक कंट्री ने आपको, जो आपको हेल्प करता है ज़िंदगी बिताने में, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी. कमिंग टू नेक्स्ट, वी हैव इकोनॉमिक प्रॉब्लम. व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? Economic problem means the problem of choice. Now if you see, everything revolves around this economic problem. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि चूज़ क्या करना है हर बंदे को. अगर हम बात करें, सपोज़ अब आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी ने बोला, अब उनके पास चॉइस थी. क्या चॉइस थी? कि या तो मैं लॉकडाउन कंटिन्यू करूं या ना कंटिन्यू करूं. तो प्रॉब्लम क्या है? चूज़ करना. क्यों? चाहते हैं कि सबकी जान भी बच जाए और हमारी इकॉनमी भी चलती रहे. ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, बट can we go for both things? No, we cannot. We have, है ना, therefore what we have is economic problem. कोई भी चीज़ में इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है. मैं एक मोबाइल सेट खरीदने गई एंड आई वांटेड टू सी विच मोबाइल सेट डिड आई लाइक. आई लाइक 2 of them. आई लाइक iPhone 11 Pro जो आया है, iPhone का 11 Pro. आई ऑल्सो लाइक द न्यू OnePlus 70 Pro. So I had both the options. I could have bought any one. No, unlimited. I wanted to show off also. I wanted to work also. पैसे तो लिमिटेड थे मेरे पास. आई हैड टू चूज़ कौन सा लेना है. दैट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. हर चीज़ में यही प्रॉब्लम है. क्यों अराइज होती है? 3 रीजंस की वजह से अराइज होती है. पहला, आर वांट्स आर अनलिमिटेड. वी वांट एवरीथिंग इन द कंट्री. हर चीज़ चाहिए हमें, जितनी भी हो सकती है. सेकेंड,
The resources which we have are limited nature. पैसा limited है, trees, wheat, rice, everything is limited. Coal, fuel, crude oil, everything is limited in nature. Time यहाँ तक limited. We only have 24 hours in a day. कभी कभार मन करता है 24 आवर्स इन अ डे है, हम लोग मूवी भी देख लें, पढ़ाई भी कर लें, फ्रेंड्स के साथ भी चले जाएं, चैटिंग भी कर लें, सब कर लें, वो टाइम तो लिमिटेड है. वी वांट एवरीथिंग एंड दैट लिमिटेड रिसोर्स विच वी हैव कैन बी पुट टू एनी यूज विच वी लाइक. It has alternate uses. Because of these three things only economic problems arise, and the whole economy has only one main purpose: how to do away with this economic problem. ये कैसे ख़त्म करें, ठीक है, ये कैसे ख़त्म की जाए, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम. बिकॉज इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. यहाँ तक कि हम इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए हैं एंड द पर्सन हैज़, जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है, द इंटरव्यूअर, ही हैज़ अ चॉइस ऑफ सेलेक्टिंग मी और द अदर पर्सन और द कैंडिडेट. बिकॉज वॉट ही वॉन्ट्स, सारा काम करना जाने. रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड है, ठीक है, या तो मुझे सैलरी देगा या उसको देगा. ऑल्टरनेट यूज रिसोर्स का. एवरीथिंग इज इकोनॉमिक्स. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, आफ्टर दिस व्हाट वी सी इज, what is an activity? There are two types of activities in economy which we have. One is called an economic activity, other is called a non-economic activity. Now what is an economic activity? Economic activity is the one which is related to money or profit. Any activity which aims at earning money, earning profit, is called an economic activity. Whereas any activity which is aimed at earning satisfaction or love is called a non-economic activity. Okay, now let's say me teaching you guys is an economic activity. I'm doing it for my remuneration. But me teaching my children at home will be a non-economic activity. It's done for satisfaction. Okay, a person, your mother cooking at your home is a non-economic activity. But your mother cooking in a restaurant is an economic activity. So we don't count for non-economic activity. What we count for is economic activity. Now coming to next, we will not talk about macro and micro in this video. That will be in the next video. Coming to next, only last topic is left, that is consumer producer. Who's a consumer? A consumer is the one who directly consumes something, who directly consumes final goods. Now what are the final goods? Final goods जो वो directly consume कर सकता है उसको बोलते हैं. Final goods वो होते हैं जो हम directly consume करते हैं. जो हम directly consume नहीं करते, जो हम further production के लिए use करते हैं या फिर resale के लिए use करते हैं, उनको हम intermediate goods बोलते हैं. For example, if a car is purchased by you for your home, it is a final good. You are a consumer. But if a car is purchased by Haldiram to deliver things, now that becomes an intermediate good. वो गाड़ी कहाँ यूज़ हो रही है, further production में यूज़ हो रही है, ठीक है. तो कंज्यूमर कौन है, जो डायरेक्टली यूज़ करता है फाइनल गुड को. प्रोड्यूसर ऑन द कंट्री इज द वन हु चेंजेस द फॉर्म, टाइम और प्लेस ऑफ अ गुड. फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोड्यूसर है जिसने वुड लॉक को चेंज करके वुड का बोर्ड बना दिया या वुडन बेंच बना दिया. अ प्रोड्यूसर इज़ अ वन जो एप्पल ग्रो हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, उसको फरीदाबाद तक ले आया. उसने क्या चेंज कर दिया, प्लेस चेंज कर दिया. उसका प्रोड्यूसर है. एक प्रोड्यूसर वो होता है जिसने टाइम चेंज कर दिया. टाइम कैसे चेंज करा, एप्पल, वी हैव पीस मटर, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द ईयर, लेट्स से वो मटर जो प्रोड्यूस हुए थे विंटर सीजन में, हम लोग समर्स में भी खाते हैं, सफल के मटर हैं, ठीक है. सो व्हाट हैपेंड, बिकॉज ऑफ वेयर हाउसिंग, बिकॉज ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, द प्रोड्यूसर चेंज द टाइम. तो जो भी चीज़ किसी की फॉर्म चेंज करता है उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर. देन वी हैव लास्ट टू, दैट इज कॉल्ड सर्विस होल्डर एंड सर्विस प्रोवाइडर. दे मे बी सेम, दे मे नॉट बी सेम. सर्विस होल्डर होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. जिसके पास लैंड है वो कौन है, सर्विस होल्डर है, मेरी ज़मीन है, ठीक है. लेबर, मैं लेबर हूँ, मैं काम कर रही हूँ. थर्ड, कैपिटल, जिसके पास पैसा है, मनी लेंडर्स, सर्विस होल्डर. फोर्थ, एंटरप्रेन्योरशिप, वो क्या होता है, मैनेजरियल स्किल्स, ठीक है. ये होता है सर्विस होल्डर्स. सर्विस प्रोवाइडर मे बी द सेम पर्सन, मे नॉट बी द सेम पर्सन. लैंड जो बंदा प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर है. अब लेबर है, मैं सर्विस होल्डर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं सर्विस होल्डर हूँ, बट आई एम नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विस. द सर्विस प्रोवाइडर इज DAV स्कूल, तो प्रोवाइडर अलग हो गया, ठीक है. प्रोवाइडर इज द पर्सन हु विल प्रोवाइड यू सर्विस फॉर अ पेमेंट, whereas service holder is a factor of production. So in this video we have talked about what is an economy, what is economics, what is an economic activity, then the consumer, producer and service holders. Hope to see you in the next video. Thank you.